Good morning. Good morning and welcome to the fifth episode of the daily analysis of the market. Okay, I'm sorry, today is the first time maybe that I have actually completed all my technical problems and मेरा video maybe सही आ रहा है नहीं आ रहा है I'm not sure लेकिन I hope everything is working. Okay, so let me start quickly. I hope कि you're enjoying your days and just reminding कि जैसे ये गर्मी 5 दिनों एक दिन 2 दिन के अंदर ये गर्मी इतनी तेज बढ़ गई है वैसे ही ये मार्केट की गर्मी भी इतनी तेज बढ़ गई है, राइट? So I hope you're enjoying this unexpected heat. And just a reminder ki how quickly the markets and local sentiment can actually change within the swing of things. So this is episode 4 of the sounding board series. Okay, we are live every day at 8 p.m. and we squeeze every complex news that happens throughout the day or in the evening in other markets and update you pre-market so that you have a good defined pre-market strategy. At least you're going in with something new and not just the uh, not blinded or not blindfold. So ये sounding board क्या है? Sounding board का मतलब यही है कि before you take any decision in the market to invest, not invest, do whatever that you have to, just run it across us. I have questions that I compile throughout the day in the evening, and as soon as I have those answers, I come here and I tell you, but at 8 a.m. very sharp. Okay. So as I said earlier, my goal is simple. It is to help you set clear expectations for the day before the opening bell rings. And today, before we start, let's address the massive move in energy space that will dictate your portfolio's survival. Okay. So yesterday, the Indian market watched 6 lakh crores of investor wealth evaporate as the Nifty plummeted below 23,850 mark. देखते रहे सुबह से 2 दिन से उस दिन भी मैंने डे बिफोर अर्लियर ऑल्सो आई सेड मैंने कहा था कि इट्स अ डेड कैट बाउंस. डेड कैट बाउंस का मतलब ही ये होता है कि इट इज an unexpected bounce, but it will not sustain. It was based on news, and that hence the reason that it would not have sustained. So कल क्या हुआ? News change हो गई, and as soon as the news changed, everything changed. The market went below 23,850 mark. This was dragged mostly because because of the global trend where the Dow also dropped and the Brent crude surged back towards $92. Okay. सो टू ऑल ऑफ यू जो भी लोग ऐसे होल्डिंग जो अपनी होल्डिंग स्ट्रैटेजी लेके बैठे हैं फॉर डिप बाइज फ्रॉम यस्टरडे हु डोंट हैव अ प्लान, I want to tell you कि you are not actually trading, because whenever you trade the news, you are not trading, you are only praying, you are hoping against hope. And in the bear market, the bottom is often just a ledge away on the way down. So it means very simple that in a bear market, there is no low. The low can be lower and lower and lower. So the market has crossed the fundamentals, and what I would like you to understand is that while it may seem it is very, very lucrative, you don't really have to go ahead and invest. Okay. So let's explore if we can turn this panic into a plan. Okay. And let's dive deep into current updates like priority gas 2 order and Trump Reliance mystery to see where the smart money is actually hiding. Kya raha is market mein? So much news to break down and so much of it to understand before the market starts, and it's such a small time. So ठीक है, let me not waste any more time and get back to this. ठीक है, let us see how the index performed yesterday in the process of wiping out 6 lakh crores of invested money. ठीक है, in Donald Trump's view it was a small change. Okay, वो कहता कि भाई small change है, $120 per barrel oil जाना, it's not a big deal, it's a small change. But has it hurt us deeper than we think? Okay, let's find that out. Okay, a sizable bearish candle that wiped out all gains from last 2 sessions. Okay, it was a very strong bear reaction. So let's see how that comes out to be. So the primary culprit at closing 55,735 minus 2.13% was Bank Nifty. Every single constituent of Bank Nifty except one ended in red. The VIX spiked at 21.5, and which means कि जो भी कभी भी VIX 20 से ऊपर चले जाए तो we are officially in a high volatility zone. And in a high volatility zone, what is it that you don't do? You don't trade. You never trade in a high volatility zone. पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाए बात. So do not think कि you have hit the rock bottom, or in fact you are at the bottom of the dip. So I will buy. जिसने भी पिछले 5 दिनों से bottom of the dip बोल के खरीदा है वो loss में ही है. And I have created a video about that which says कि bottom of the dip is not a great risk management strategy.
ठीक है. So moving on, let's talk about what has actually changed. Brent crude was at 97.5, which is plus 5%. Okay. High oil is a direct tax on the Indian economy. We for every $1 going up, okay, we end up spending $2 billion more. We were, and just last to last week it was around 60 to 65. Okay, we were buying crude at 60 to 65 with Russia se to और भी cheap था, Venezuela and America se at that rate, and today it is almost at 97. It was hitting 120 just 3 days ago. Just imagine the impact on the Indian economy. ठीक है. So let's move from the digital tickers to the ground reality of India, where gas queues and government orders are now driving stock prices. So gas queues तो चलो हमने देखना शुरू कर दिया. कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं. दे सडनली स्टार्ट थिंकिंग कि भाई गैस नहीं मिलने वाली. दे स्टार्ट मेकिंग, बट इट वाज रियल. बहुत लोगों को गैस मिलनी कम. गवर्नमेंट ने रैशनिंग शुरू कर दी. गवर्नमेंट ने टाइम बिटवीन टू सिलेंडर्स, बुकिंग टाइम बिटवीन टू सिलेंडर्स वाज इंक्रीज टू 25 डेज. वो 25 दिनों से 27 दिन कर दिया. इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग. एटलीस्ट हम इस गवर्नमेंट के बारे में ये तो बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा पहले सोचना शुरू कर देते हैं. लेकिन एज एन इन्वेस्टर यू नो कि पहले सोचने का मतलब है कि इनके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि हमको गैस की प्रॉब्लम वाली है. सो एनीबडी हु इज थिंकिंग कि भाई अभी मार्केट बॉटम है, आई कीप रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन ताकि आप लोग यू डू नॉट एंड अप पुटिंग योर मनी इनटू दीज डिप स्टॉक्स एट दिस पॉइंट. डिप हुआ नहीं है, डिप होने वाला है. ठीक है. सो कतार एनर्जी डिक्लेयर्ड फोर्स मेजोर ऑन एलएनजी सप्लाईज. वहां पे किसी ईरान ने कोई रॉकेट फोड़ दिया वहां पर, उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हो गया और उन्होंने बोला कि भाई हम ये नहीं कर सकते. फोर्स मेजोर का मतलब है कि चाहे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो, चाहे आपने हमें पैसे दे दिए हो, इट डज नॉट मैटर. वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू एनी मोर गैस, क्योंकि हमारे पास गैस देने की कंडीशन ही नहीं है. देयर इज अ वॉर गोइंग अप. ठीक है. एंड दिस मीन्स कि 40% ऑफ इंडियाज गैस इंपोर्ट हैज बीन कट. हम कतार से या फिर उस स्ट्रेट क्या बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 40% ऑफ इंडियाज गैस पीछे से लेते थे. ओके, फ्रॉम सो द स्पॉट प्राइसेस फॉर गैस हैव डबल्ड टू $24 पर MMBTU. MMBTU is I don't know how to expand it, but I will get back to you. But it is a measurement of how the gas is sold. Okay, MMBTU is million. Okay, anyways, so let's not get to that. But the bigger problem here is that the government issued a natural gas supply regulation order 2026, moving fertilizers to priority sector 2. इसका मतलब है कि the government is saying कि आप लोगों को हम fertilizer देंगे, but we will only give you 70% of your gas needs. अब ये fertilizer कहाँ से आ गया गैस के बीच में? घर में ऐसी गैस नहीं आ रही थी. फर्टिलाइजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्टिलाइजर को बनाने के लिए या यूरिया बनाने के लिए गैस लगती है. द गैस इज रिक्वायर्ड. और इस टाइम पर गैस की क्या जरूरत थी भाई? हमको गैस आगे के ये रबी सीजन आ गया है, लाइक द सोइंग सीजन हैज कम. इतनी गर्मी हो गई है, सडनली फार्मर्स वांट टू स्टार्ट प्लांटिंग देयर सीड्स. तो अगर फर्टिलाइजर बनेगा नहीं, यूरिया बनेगा नहीं, तो हमें एक बम्पर क्रॉप मिलेगी नहीं. बम्पर क्रॉप नहीं मिलेगी तो हम लोगों के पास खाने के लिए फूड की कमी हो सकती है, which means कि there is going to be a drive in inflation. That is why this market is reacting. Market कभी भी does not depend on what is going to happen today. Every smart money person thinks about what is happening in the next few days. ठीक है. Coming back to domestic LPG, the price of domestic LPG was hiked by 60 rupees. सो ये कोई चार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, अब ये किचन का प्रॉब्लम हो गया. और गवर्नमेंट ने बैंगलोर और बड़े बड़े शहरों में ये भी बोल दिया कि कमर्शियल गैस पे भी लिमिटेशन दे दी है. बोला कि भाई रेस्टोरेंट्स को गैस मिलेगा नहीं. सो ठीक है, नो वरीज. सब कुछ गड़बड़ हो ही रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सही होगा. सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या सही होने वाला. अगर आप लोगों के पोर्टफोलियोज आर नॉट रियली वर्किंग हार्ड, okay, are in green, are in red now and you're panicking, don't panic. कोई पैनिक करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. Let's see how things can work out for us. ठीक है. Before we do that, let's look at across the border. Sorry, my AC is making some noise. Let's look across the border and see how global power plays in specific closing levels in New York are creating ripples in Mumbai. Okay, yesterday 2 दिन पहले मार्केट यूएस का ओपन -800 पॉइंट्स, बट इट क्लोज्ड +218 पॉइंट्स, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि हमने ईरान के साथ वॉर करना बंद कर दिया. वी डोंट वांट टू फाइट विद ईरान एनी मोर. ओके, सो दैट वाज अ गुड रिवर्जन. ठीक है, रिवर्सल. लेकिन तब तक हमारा मार्केट अच्छे से गिर चुका था. बट यस्टरडे डाउ जोन्स ड्रॉप्ड 289 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट -0.61% टू क्लोज एट 47,000. एनर्जी कंसर्न्स आउटवेड द टेम इन्फ्लेशन रिपोर्ट.
उनकी भी इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई, बट इट वाज नॉट ऑफ अ कंसर्न. एनर्जी वाज अ बिग कंसर्न. S&P 500 slipped to 5.68 points, and it is barely holding on to its support levels as the war fears mount. Okay. Now, and again, before I move on, the Nasdaq also managed a marginal gain of 19.3, but that is only because there was a jump in Oracle. I don't know if you're following Oracle and technology stocks, but that's not something that we need to talk about today. Let's just focus on what is happening. The US inflation reality is that the February CPI data, okay, February CPI rose to 2.4%, which met expectations. However, इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि there are not going to be any more job cuts. Okay, rate cuts will not happen. So, and because the job data is simple, the rate cuts will not happen. There will not be any more money. बट वाई डिड दिस हैपन? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज ये हुआ क्यों? अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला हमें वी डोंट वांट टू फाइट ईरान, देन व्हाई डिड दिस हैपन? द रीजन दैट इट हैपेंड इज बिकॉज ईरान सेज ब्रो नाउ वी डोंट केयर, तेरे को नहीं झगड़ा करना, तू मत कर, हमको तो करना है. We are not going to let 1 liter of oil pass through the Strait of Hormuz. Okay, so Donald Trump announced a $300 billion deal for the new refinery in Texas with Reliance backing. Suddenly you think कि Reliance का स्टॉक खरीद लेता, लेकिन ऐसा मत करो, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प की बात सुनना एक बेवकूफ़ी ही है. क्यों है बेवकूफ़ी? बिकॉज रिलायंस हैज नॉट सेड एनीथिंग. रिलायंस रिमेन्स साइलेंट until Reliance files the disclosure with our stock exchange. This is a headline risk for stock. Do not buy it. आप buy करने जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है आपका, you can get a loss. The last one was जो एक डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए. He actually there was this big meeting of International Energy Association who announced that हम 400 million barrel reserve जो है reserve कोटा ऑफ ऑयल है उसको रिलीज कर देंगे, एंड वी विल कर्टेल द फेयर कि ऑयल का प्राइस बढ़ते जाएगा. बट ऑयल स्टिल वेंट अप. व्हाई? बहुत बड़ा क्वेश्चन है. बहुत सिंपल आंसर है. दे चाहे वो 400 मिलियन कर ले चाहे 500 मिलियन कर ले, वो एक पर्टिकुलर रेट से ज्यादा नहीं कर सकता. दे कैन ओनली रिलीज ऑयल एट द रेट ऑफ 2 मिलियन बैरल्स पर लीटर. ठीक है, 2 मिलियन बैरल्स पर लीटर. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक दिन में 20 मिलियन बैरल्स पर मिलियन बैरल्स का ऑयल जाता है. कंपेयर दैट टू 2 मिलियन कमिंग बैक इनटू द मार्केट. तो इस मार्केट में प्रॉब्लम होगी, चाहे ये बड़े बड़े नंबर्स लो, लेकिन सच्चाई ये है कि द मार्केट इज अफ्रेड ऑफ अ सप्लाई ब्लॉक देन बी कंफर्टेड बाय रिजर्व्स. तो ये एवरीबडी सीज द रिस्क. आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली बिकॉज ऑफ दिस डेटा. Okay. Now that we know why, let us define where by marking the specific price levels that will act as our safety net. Okay. My bias for today is that it is an aggressively defensive day. Key resistance for Nifty is 24,150. And we will stay bearish until we close above this. Even if we close above it, it's not going to become bullish suddenly. It will remain bearish. Okay. Key support for Nifty has come down from 24,000 to 23,600. If this breaks, the fall will accelerate towards 22,500. I would bet that this is what might happen because India ke oil and gas supply shocks, as the day pass, it become more and more clearer. The move that you need to do is, अगर आपको करना ही है इन्वेस्ट, ओके, तो फार्मा एंड फर्टिलाइजर्स में करो बिकॉज गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट है. बिकॉज द रीजन तो चलो इज एन एवरग्रीन. सर दर्द तो किसी ना किसी को होगा ही, जुकाम होगा ही, बीमार पड़ेगा ही, तो फार्मा तो चलेगा. लेकिन फर्टिलाइजर्स बिकॉज गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इट, उनको भी पता है कि अगर हमने फर्टिलाइजर में नहीं डाला तो प्रॉब्लम हो सकती है. सो फर्टिलाइजर इज अ गुड स्टॉक. एग्जिट हाई डेट, मिड कैप्स एंड ऑटो. डू नॉट स्टे इनटू दिस. ठीक है, कूल. सो this was my session for today, but again, as I end my session today with question and answers that I built over the last one day. So like everybody, some of my friends and some of my followers, a lot of my followers in fact email the questions to me just a day before, and as I collate these questions, so I have 7-8 questions. So let's see what those questions and answers are, because ये question and answer is also very important. जैसा आपको पता ही है, हमने जिंदगी भर यही करा है. किसी भी एग्जाम से पहले पेपर सॉल्व करना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी वजह से समटाइम्स यू गेट टू नो कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं क्या करूंगा. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन है अर्जुन, पहला क्वेश्चन है, okay, अर्जुन इज सेइंग कि आई बॉट रिलायंस RIL today thinking because of the Trump tweet, but the stock is falling to hit the but the stock is falling to hit the lower circuit.
इन सॉरी सॉरी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लिखा अर्जुन. सो बेसिकली अर्जुन इज सेइंग कि उन्होंने रिलायंस खरीदा बेस्ड ऑन द ट्रम्प ट्वीट और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपर सर्किट हिट करेगा लेकिन ये गिरना चालू हो गया. तो जैसा कि मैंने कहा अर्जुन, यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रम्प जो है बिलीव्स इन अ लॉट ऑफ वर्ड स्पेस. ओके, बहुत ज्यादा बातें करने में बिलीव करते हैं. उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारी चीजें बातें कर कर ही करी हैं. डू नॉट गेट इन टू दिस, डू नॉट बाय रिलायंस अंटिल रिलायंस सेज कि भाई हमने $300 बिलियन की टेक्सास में रिफाइनरी खोलने का प्लान बना लिया. ओके, $300 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी. आई एम नॉट श्योर इफ रिलायंस is wanting to invest that in the American market is a great idea. So let's wait for Reliance to come. If you have bought Reliance, wait for your stop loss. If you hit your stop loss, you might want to get out. But if you still believe that it is a good news, stay into it. Okay, but do not try and average the position. That would be a mistake. Okay? I hope that was clear. Okay, moving on to the next question. It is Ishani. Sorry, what? Okay, Ishani is saying ki, should I buy Petronet LNG now that it is down 10%? इफ फर्टिलाइजर, मतलब आई वांट टू गिव यू दिस क्वेश्चन. पेट्रोनेट एलएनजी को छोड़ो, अगर प्रायोरिटी नंबर 2 फर्टिलाइजर है तो प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है? पाइप्ड गैस एंड सीएनजी, राइट? तो पेट्रोनेट एलएनजी इज पाइप्ड गैस एंड सीएनजी. सो यस, यू मे बाय राइट नाउ बट डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ एकदम से टर्न होगा, बिकॉज व्हाट यू हैव डन इज बेसिकली इट इज ऑलरेडी गॉन अप बहुत ज्यादा. ऑलरेडी कल ही गैस के सारे गैस stocks have gone up by like 10-12%. So you may be at the upper end of the crest already. So, but keep a close eye. If it meets the criteria, do buy it. Okay. The third question is Neha. Neha is saying ki the VIX is at 21. Okay. The VIX is at 21. What should I do? Neha ji, VIX is at 21. What should I do? Is it the right time to buy insurance for my portfolio? Okay. VIX is 21. बहुत बढ़िया है. दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन. 20 के ऊपर जब विक्स होती है, यू शुड नॉट बी ट्रेडिंग इन द मार्केट. बट व्हाट डू यू मीन टू बाय इंश्योरेंस फॉर माय पोर्टफोलियो? आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय बाइंग इंश्योरेंस फॉर माय पोर्टफोलियो. इंश्योरेंस का मतलब अगर आप कहना चाहते हैं कि डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स और एफडीज, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम कैश को रखने का. इससे बढ़िया टाइम और इससे बढ़िया साल है ही नहीं. सो इफ यू हैव एज मच कैश लाइंग अराउंड विथ यू, कीप इट इन द बैंक्स. डू नॉट put it in the stocks. This year has been volatile and आगे जाकर भी ये वॉलेटाइल ही रहेगा. ओके, कूल. ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज सॉरी इज द okay, fourth question is by Rohan. Rohan is saying, is government of India hiding a fuel shortage? I see lines at pumps. ओके, तो इसमें दो पॉइंट्स हैं. देर आर 2 पॉइंट्स. ओके, आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस विद वेरी 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 क्लियर. क्या बोलते हैं मैं कोई ऐसे पैनिक स्प्रेड नहीं करना चाहता, बट आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन यू इनफ इन्फॉर्मेशन. ओके, आई थिंक इट इज फॉर यू टू गो एंड सीक दैट इन्फॉर्मेशन बिफोर यू मेक दैट कॉल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैनिक बाइंग तो वो लोग कर रहे हैं जो जाके पेट्रोल पे लाइन में खड़े हो रहे हैं, जरूर वो ये सोच के कि हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा. ऐसी सिचुएशन जहां पे इंडिया को पेट्रोल नहीं मिलेगा इज नॉट गोना कम सो इजीली, राइट? इट्स नॉट गोना हैपन कि इंडिया में लोगों की पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी. दैट इज नॉट गोना हैपन. हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है गैस की शॉर्टेज. पेट्रोल हमारे पास 9.5 दिनों का और पेट्रोलियम रिजर्व पड़ा हुआ है जो चल जाएगा, एंड ऊपर से रशिया का भी क्रूड पहुंच जाएगा, तब तक विल बी फाइन. ठीक है, लेकिन गैस की शॉर्टेज है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. सो पेट्रोल इज नॉट अ प्रॉब्लम. यू शुड सी गैस इज अ प्रॉब्लम. फेयर एनफ, नो वरीज. आई होप यू डोंट क्यू ऑन द पेट्रोल लाइन. इट्स ओके, कभी कभी लोगों को कर देना चाहिए क्यों, जरूरी नहीं है कि आप भी उस लाइन में खड़े रहे. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कमिंग फ्रॉम कबीर, एंड हु इज सेइंग विद ऑयल एट $97 इज एशियन पेंट्स अ गुड वैल्यू पिक? तो कबीर, मैं ये कहना चाहता हूं कि यू मस्ट अंडरस्टैंड एशियन पेंट्स के पेंट बनाने का रॉ मटेरियल इज ऑयल. अगर रॉ मटेरियल का जैसे कि ऑयल का इन दिस केस प्राइस हैज गॉन अप, will Asian Paint be a good value pick for you? This is a question you can answer by yourself by doing a simple math. So please just do the simple math and do it yourself. I don't think I should be able to give you this answer. ये तो बहुत simple research से भी पता चल जाएगा. But just because you ask me, मेरा फर्ज है बताना, तो मैं बताऊंगा कि do not buy Asian Paints when the oil price is high. It is a bad game. ठीक है. So that's the end of my great. Somebody is asking, I bought ATGL last week during the fall. I think you should hold on to ATGL because gas prices are going up. So yeah, staying put with ATGL, Mr. Howard, will be a good idea. I hope you understand Hindi.
I'm not sure if you don't, but what I'm trying to say is that ATGL is a good dip. Let it be with you, and don't sell it as of now because there is a good amount of volatility in the market. Okay. So moving on, it's 20 minutes, and I think it's a quick recap of market. So remember, I'm here every day 8 a.m. in the morning. Okay, I'm thinking I'll make it 7 a.m. also. Could depend karta hai. I'm getting more requests, but I'm not sure if it should be 7 a.m. or not. You let me know if you need it to be done at 7 a.m. or not. But I will be here at 7 a.m. every day trying to pre-analyze the market for you so that you are prepared what to do about the market today. Okay, just to summarize, I want to give you this summary as well कि आज के market की key levels, watch out areas क्या हैं. In fact, if you have missed it, you can use this right now, or you can go back and check it out in this video as well. So Nifty, just hang on. ओके, सो आज के दिन का मार्केट का व्हाट इज द आउटलुक. द मार्केट्स आउटलुक टुडे इज एग्रेसिवली डिफेंसिव. ओके, द की रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी इज 24,150 and we are bearish. We are in the bearish territory officially, so we will remain in the bearish territory. The key support is 23,600. If it breaks 23,600, the acceleration to 22,500 will be dramatically fast. So be careful. If you really want to invest, my advice is do not invest because the volatility is 2120 के ऊपर, तो you should never invest in the market. So that's that. And before I go, I'm available. My team is available. आप comments कर सकते हैं, आप हमें emails कर सकते हैं. The email address is listed here. It's hey@darkmatter.co.in, and I will address your questions in today's live session or tomorrow morning. Okay, so today's live session starts at 9:15, ends at 12:15, because as soon as it opens, I speak every 15 minutes and tell you कि क्या हो रहा है, but जरूरी नहीं कि मैं आपको कोई trading advice दूं. Similarly, I go live again at 2:30 and stay live up to 3:30. वहाँ पे भी I just handhold people to the close. मेरा basic idea ये है कि मैंने बहुत time लगाकर I have learned this market. Okay, and I know how हेल्पफुल इट इज अगर कोई आपका बात सुनने के लिए रेडी है. अगर आपकी कोई बात सुन रहा है, ओके, इफ दे आर एबल टू एब्जॉर्ब व्हाट इज सेइंग एंड दे आर एबल टू गिव योर ओपिनियन, इससे बहुत ज्यादा वैलिडेशन मिलती है, बहुत पैसे बच जाते हैं. सो आई एम हियर टू डू इट फॉर टू यू for free as well. I do it for a lot of people for money, but I'm promoting this channel, so I'm going to do it for you as well. So that's great. Subscribe to my channel if you would like to be abreast with a lot of updates. And thanks a lot for tuning in, and thank you for your time. Have a great day. Make some money, but most important is that don't lose money. Okay? So thank you again, and bye-bye.